हाँ भाई, चिल मारे आज थोड़ा। मिशंस करेंगे हॉगवर्ट्स लेगेसी में, और क्या है, विचर 3 अपने पास, और क्या है तो नहीं। रेड डेड तो मैं पूरा खेलूंगा, विचर भी वैसे मुझे पूरा खेलना है एक बार। ठीक है, चल हॉगवर्ट्स लेगेसी में कर लेते हैं। एडमिशंस कंप्लीट। We just check processes running in the background. Discord quit, client quit, checked, चलने दो, चलने दो। साउंड कैप्चर चाहिए, स्टीम चाहिए, वॉलपेपर। फाइन, चलो। A lift? Must be how I get down. ओ ओ ओ ओ, Looks broken though. भाई साहब यहाँ से नीचे क्या है? मैं गिरूंगा मुंह के बल। लिफ्ट का क्या करूं? नो। हम्म, क्यों? Accio! I क्या need to होगा भाई fix यहाँ? the lift before I can use it. आई नीड टू फिक्स इट। ओके, रिपेयर हो। Repairer. ओ ओ ओ, पूरा सही हो गया भाई। That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me. Confringo! I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Accio! Wingardium Levioso! I'm going to have to get past this. Reparo! Levioso! Bombarda! Confringo! One more to go and I'll make it across. Reparo! Levioso! Something is getting in the way of that platform. खाना खा लो। टूथपिक क्यों खा रहा है? खाना खाने का मन नहीं हो रहा यार।
बहुत मन नहीं है खाना खाने का यार। एंड वेलकम टू द स्ट्रीम में का यार, हाउ आर यू? ये था रास्ता, ये था रास्ता। यप। Levioso. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. ये ओके। एक्यो है कहाँ पे? Accio. ओह Levioso. Aha. ओके हूँ। Got it. ओके नाइस। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? This must be the way. I need to find a way to open that gate. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. एग्जिट, एग्जिटिंग हनी ड्यूक्स। और बता यार। कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं था करने को। एंड थोड़ी हालत बेटर फील हुई तो मैंने सोचा मैं भी स्ट्रीम करने जा रही हूँ बस अभी काम करने। क्या काम करोगे, पढ़ाई या घर के वगैरह काम? मेरे पे लिटरली कुछ नहीं था करने को, इसलिए मैंने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ करने का, ना खाने का, ना सोने का, ना लेटने का। दोनों ही नाइस यार। मेहनती हो यार तुम तो। Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. लॉल श्योर। श्योर क्या भाई हो तुम? ओह केक खा रहा है मेरा करेक्टर, मैं तो खा नहीं सकता। अच्छा हॉग्समीड में निकल आया मैं। वाह। Hello, pardon me. चल मैं जा रही, बाय 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 बाय, टेक केयर। No Velo, no. Not feeling well enough to fuck my brain in Valorant. Aloha Mora. बीमार हो गया था अभी तो इट्स बेटर। Revelio. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again.
I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Hello, Vedic Thanks bro. for Welcome stopping to the by. stream. Hope to see you again. How are you, man? बढ़िया भाई, तुम बताओ? मैं भी ठीक यार, ट्राइंग टू बी बेटर। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई एंड ऑल एवरीथिंग? हेलो अंश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन। Revelio. A Hogwarts coat of arms use a lion, snake, eagle, and a badger representing each of the four houses, along with the school motto Draco Domains. Then Quam Titi Landus means never take kill a sleeping dragon. Makes sense. Hello, Gareth. I have those चल dried रही है अभी billywigs तो things. nice यार। You got them? Incredible. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Quest completed. लेवल अप होने से बच गया। Keepers on second optic canvas, the scope, $2,500 बचे यार सिर्फ। अनअपग्रेडेबल $48, 5 and 6. He cannot be upgraded. It's 185. It cannot be upgradable. 53. Quest Wing 3 to 20 लेवल चाहिए। Glad you came. गॉड ऑफ वॉर भी खेलोगे? नहीं, अभी तो नहीं। Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock.
Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. ये खत्म होने के बाद ये तो खत्म हो चुका है. I've I'll try to completed go the and see story. how I've I can. completed It would mean the the series world Hogwarts to me. Legacy's And to main Dorothy. story quest series. Aidan was bringing the I'm box done of with letters to Hogwarts me when he Legacy. was taken ill. अभी तो मैं side Doc quests couldn't and tell side you where missions he वगैरह might कर have रहा हूँ dropped it. because I'm not feeling well to play any FPS You'll or find the hamlet just competitive north of game. Hogsmeade. Please do give Dot my love. So I'm just for chilling and time pass. I'm doing side mission. I'm done. खत्म हो चुका है ये. Next I'll play some new story game, which I'll decide when it will be because Upper Oxford. तो खत्म तो हो चुका है. I'm done with this. The series of Hogwarts Legacy story game का जो main story quest series था वो मेरा हो चुका है complete. Three streams. Hogsfield. Now where to 11 hour find Mrs. 55 minutes, Sprottle? 11 hour 45 minutes, and 11 hour 10 minutes. I'm done with the game. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it.
An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Who's that? This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. To visit the cave to find Sorona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk. Better have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Revelio. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Rest easy, my large friend.
This must be Sorona's box of letters. I should take this box of letters to Sorona. She'll be glad. I think that's everything. You can feed a beast, or it can feed you. One in valid. Shane Bardolph thought... Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Knowing Amit, he's likely studied here. Leo. ये वाला मिशन करेंगे. Let's return the box to Serona. Oh, here's a pleasant surprise. Confringo! Confringo! That's that. Settled. Pardon me? Might I ask?
Revelio. I beg your pardon, but would you like me helping out an old woman? He'll see it was a mistake parting. Revelio. Wish I had the courage to go into the forest. Aloha Mora. Mine now, demi guys. Revelio. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlic? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I'm glad I could be of help. Hello Ronin भाई, welcome Mrs. to the Sprottle stream. sends her best. तबीयत कैसी है? Don't know what I'd have तबीयत done without her and Aiden. नॉर्मल से नीचे ही है थोड़ी. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. It will soon. Thank you Ronin भाई. How are you doing? कैसा चल रहा है दिन? कैसा कट रहा है दिन?
Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. So I'm back, welcome back to the stream. वैसे तुम कुछ बोलते थे मैं से बोलते थे मतलब बोलता तो मैं हूँ ही मतलब गूंगा तो नहीं हूँ. आज तो कोई और गेम नहीं था. हाँ और कोई और गेम था but I'm not in the position and condition to play an FPS game. नया गेम सीखना पड़ता है, दिमाग मारना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, एनर्जी डालनी. बोल रहे थे हाँ आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया था मैंने और तो कुछ नहीं बोला था. तो मेरी पे इतनी जानी थी कि आई कैन प्ले एनी FPS गेम, एपेक्स, वैल, ऑन द न्यू स्प्लिटगेट 2 आई वाज अबाउट टू ट्राई एंड ऑल. तो मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया है. अगर मैं कल तक और बेटर होता हूँ तो, नहीं होता तो पता नहीं, देखते हैं. बट आई विल ट्राई दैट न्यू गेम, जस्ट नॉट नाउ. I don't have the energy right now. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We Ludo need to know how they are being blackmailed by filling Harlow. and doing side Meet me missions. here after you have spoken with them. अभी इसके कर रहा हूँ, थोड़ी देर में विचार के करूँगा. Hopefully by the time you जैसा मन return, होता रहेगा I ऐसे will करता be रहूँगा. bit more freely. आराम कर लेता. आराम कर ही रहा था सुबह से. फिर शाम को आई थॉट एक टाइम पास स्ट्रीम कर ही लेता हूँ, जस्ट चैटिंग टाइप्स. और कुछ था ही नहीं करने को. लिटरली नथिंग. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I... Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. डॉक्टर के पास गया था, लगता है ज़्यादा मुट्ठी मार ली. Thank you, मुट्ठी मार Mrs. के तो Rabe. तबीयत ठीक हुई है. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Do you smoke? No, I don't.
Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. What have you been doing to keep the extortion a Pretty hello secret? broken bunker bro, Well, welcome as to I the stream. mentioned, creative ये मुंह में क्या है? bookkeeping. Toothpick And Raul भाई. I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed पास it गया to था? नहीं. memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. एक आखिरी ये बंदा on the बचा है right बात track. करने के लिए. इससे Now बात to करने find the के last बाद of फिर Mr. एविडेंस Bickle's friends. इकट्ठा हो जाएगा आई थिंक. और उधर उस कोने में. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, Aloha as Mora. you already know. I
I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. Return to the meeting spot to update Natty. Okay, okay. Accio. Revelio. डुबकी मार ली मेरे करेक्टर ने तो डुबकी Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo. Revelio. इसकी तितली कहाँ है बे? तो रात को ही दिखेगी यार, तो बाद में देखेंगे, पहले नेटी से बात करने चल लेते हैं। It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Search for Natty near the Hog's Head Inn. Okay. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. Natty She can cast without it. Natty उन्हें wand क्या कर रही है हमारे पास? Hello रोहित भाई, welcome to the stream. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. My first employment. Aloha Mora. In my house. Work hard and don't be afraid to fail. That is the path of a leader. If I thought I could compete with Serona, I'd open my own. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. I made it to Hogsmeade later. Still had some trouble. They need to running things. It's not gonna work. Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Lower Hogsfield needs some stocks after our visit. Was it upper or lower Hogsfield that we raided last week?
Rookwood will reward us for our loyalty, don't you fret. I shall cast my eyes closer. Best to be I don't know why they're called unforgivable curses. Using them don't bother me none. Too much fire whiskey. I'm seeing things. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him? I've robbed every traveling vendor that's passed through here. They never... Be on the lookout for the girl's friend, if they're daft enough to try to come through here. An aversion to the... Let's finish this job and be done with it. Waste of time, this is. When we're done here, I'm going straight to the hogshead. We'll find ourselves just then. We may be working with the goblins for now, but soon they'll be answering to us. I didn't know even worth stealing in Morrowind. They don't seem to care for me in the Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. Revelio. What? I've used unforgivable curses on occasion. Fortunately, I'm not looking to be forgiven. Revelio. My loyalty's to Rookwood and no one else. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. The girl's friend won't come looking for her. Too dangerous. We're wasting our time. The more graves I fill, the more galleons I get. Won't hear me complaining. Returnicus Totalis. Natty must be here somewhere. Revelio. Aloha Mora. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. I don't want to work with goblins. Rookwood's gone mad.
How did I get mixed up? You know, it was a good haul. What's that? Incendio. Defender. Flipendo. Incendio. Stupid. Don't go down easy. Come on, you're afraid to fight back. Glacius. Defender. Cynthia. Made him great. Incendio. Expulsion. Is this Tomar? Levioso. Accio. Expulsion. Flash of inspiration. Confringo. Expulsion. Stupefy. Die for that. Expelliarmus! Confringo. Arresto momentum. Crucio. Bombarda. What have you done? Oh, this is... Glacius. Defender. Expulsion. UDAX. न्यू कड़ी ब्रोकन है भाई, न्यू एजेंट का भी ब्रोकन है। हाँ, स्टार्टिंग में सारे नए एजेंट ब्रोकन ही आते हैं, फिर बाद में ही नर्फ कर देते हैं, हमेशा का है। बाहर निकलना है क्या? यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? पूरा रास्ता बाहर निकलने का। Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. कल के मैच ने गाफ फाड़ दी। हाँ, बहुत क्रेजी मैच था, बहुत अच्छा था, जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आटे की टक्कर का एंड नॉट वन साइडेड। I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. तेओ का एबिलिटी को नर्फ कर दिया है। आज भी एक भी एबिलिटी नहीं तोड़ सकता तेओ।
अब कई केजे की एक भी एबिलिटी नहीं तोड़नी, नहीं टरेट वगैरह तो तोड़ सकता है अभी भी अगर सही जगह पे डाले तो, बट हाँ अल्ट नहीं तोड़ सकता, विच इज़ गुड। मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार केजे 8 राउंड खेल के और इकट्ठी कर कर के अल्ट बिल्ड करे और फिर तेओ की एबिलिटी से एक बारी में टूट जाए, ऐसे थोड़ी होता है, दैट्स नॉट फेयर ना। तो सही किया तेओ की एबिलिटी को नर्फ करके, क्योंकि ऐसे एक रीजनरेट होने वाली फ्री की एबिलिटी इतने राउंड खेल के और इकट्ठे करके मेहनत करके अल्ट बिल्ड करने के बाद यूज़ करने वाली एबिलिटी को तोड़ दे, इज़ नॉट फेयर, नॉट एट ऑल फेयर। फर्स्ट टाइम देखा मैं स्ट्रीम पे T1 पे 4 पे एंड G2 0 पे, सेकंड टाइम देखा T1 9 पे, E2 3 पे, थर्ड टाइम देखा T1 12 G2 12। हाँ बहुत अच्छा था, अच्छा था, बहुत काटे के टक्कर का मैच था। सिर्फ एक मैप नहीं, 5 मैप, 5 में से 4 मैप ओवर टाइम, तो was something crazy, like it was what I wanted. Lumos. Defender. Lumos. Revelio. Lumos. इस दोनों में एक साथ डालूं केजे अल्ट पे तब भी नहीं टूटेगा ना, दोनों का एक साथ डालने का ही तो नर्फ किया है। Mine now. Revelio. Alohomora. सब सो गए हॉग्समीड में रात को, कोई नहीं दिख रहा सड़कों पे उठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, रमज़ान करीम। What does that mean, bro? Revelio. The precariously stacked set of cauldrons outside fashion while admitting eye catching is for anyone. रमज़ान चल रहा है, वेरी वेरी फॉर द मुस्लिम्स। हाँ रमज़ान का तो मुझे आइडिया है, बट वो तो पहले और करीम मतलब वगैरह क्या होता है? करीम तो मैंने वो सुना है यार, करीम तो मेरे शहर में एक बिजनेस शॉप का नाम है, करीम करके है वो। नॉट फेस्टिवल बट यू गेट द पॉइंट। नहीं फेस्टिवल ही तो है आई थिंक, फेस्टिवल जैसे मतलब मनाना होता है, फॉलो करना होता है, नॉट फेस्टिवल जैसे ही मान लो।
रमजान करीम मतलब मुबारक समझ लो। अच्छा, करी करीम करके ना एक बिजनेस का नाम फिर गलत। You are the talk of the school since you saved Mr. Reb and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harley. Incendio! Protego! Stupid one! Bombarder! Confringo! Stupid one! Confringo! Is that inferior to when you give it jump? That must be bargain. Confringo! Oh, Bormont Fog. Jumper. I'm not sure Madam Beaumont would want to know what really happened to him. Report back to Claire Beaumont. इधर करीम नहीं बोलते, मुबारक ही बोलते हैं। करीम बंदे का नाम होगा शायद, हाँ वो हो सकता है। Bombarder! Depulsor! Revelio! Bombarder! Confringo! करीम का लिटर मीनिंग है जनरल। हाँ तो फिर वो बंदे का नाम करीम है। तो मुझे मर्लिन ट्रायल करने दो। I know what that means. Merlin trial. Revelio. Accio. पल्सो से ही होगा ये तो आगे। तो हमारा जनरल मीनिंग है शायद। अब ये सब्जेक्ट छोड़ता हूँ। सब्जेक्ट छोड़ता हूँ मतलब पहले शायद बॉर्डर तो वो कन्फ्रिंगो से खाली करना था पहले। अब जाएगा ये आगे उसमें पल्सो करके। कंप्लीट ही वाला मर्लिन ट्रायल भी होता है गेम में कितनी दूर हो। इसमें ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया गेम। ये तो मैं साइड मिशंस कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरी तबीयत कल थोड़ी ख़राब हो गई थी। ऑन स्ट्रीम मैं बोल के गया था कि मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, तो मैं बीच में स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। कल मैं बोल के गया था तो वो तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं FPS गेम वगैरह खेलने का नहीं कर रहा सीन अभी, क्योंकि हालत सीधी हो रही उतनी। तो मैं टाइम पास मतलब मैंने सोचा जस्ट चैटिंग स्लैश टाइम पास स्ट्रीम कर लेता हूँ, तो इसलिए साइड मिशन वगैरह कर लेता हूँ स्ट्रीम पे ऐसे ही और टाइम पास कर लेता हूँ। क्योंकि गेम तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये सो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो हमारा मेन जो विलन था रैनरॉक, उससे हमारी बहुत तगड़ी बहुत ही भयानक बॉस फाइट हुई एंड मज़ा आ गया। वो तो बहुत और डिफ़िकल्ट थी भाई। वो सोचो मैं इजी पे खेल रहा था और तब भी वो फाइट इतनी डिफ़िकल्ट थी। अगर मैं और हायर डिफ़िकल्टी लेवल पे खेल रहा था तब तो भाई जहर ही था वो फाइट एंड बहुत क्रेजी था। मतलब एंड में ये होता है कि हम सारे ट्रायल्स कंप्लीट एक एक करके हम सारे ट्रायल्स कंप्लीट करते हैं एंशिएंट मैजिक कीपर्स के, और फिर एंशिएंट मैजिक कीपर्स का ट्रस्ट वगैरह हम पे बिल्ड होता है और वो हमको सिखाते हैं एंशिएंट मैजिक यूज़ करना। और हमको जो मैजिक जो डिफेंड करना था रैनरॉक से, वो तो हम नहीं कर पाते। रैनरॉक हमसे पहले पहुंच जाता है और वो मैजिक अब्जॉर्ब करके एक मॉन्स्टरस ड्रैगन में बदल जाता है डार्क मैजिक के। फिर हम अपनी एंशिएंट मैजिक वॉन्ड से यूज़ करके एंटर करके वहाँ पे फाइट करते हैं, फाइट वगैरह करके उसे हरा के उसको मार के फिर वो डार्क मैजिक को वापस कंट्रोल में ला के और सेफ गार्ड करके रख के खुद उन कीपर्स का जिनके हमने ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट करो तो जो हमें पूरा एंशिएंट मैजिक वगैरह यूज़ करना सिखाता है, हम खुद एक कीपर बन जाते हैं एंड में। और हॉगवर्ड्स को सेव करके पूरे विजन वर्ल्ड को सेव करके हम लेगेसी बन जाते हैं, इसलिए गेम का नाम हॉगवर्ड्स लेगेसी। ये सब साइड मिशन है। मेन स्टोरी को इसमें कर चुका हूँ, मेन स्टोरी लाइन ऑन स्ट्रीम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ एंड गेम ख़त्म कर चुका हूँ। सीरीज़ प्लेलिस्ट बना के मैंने रखी हुई है। प्लेलिस्ट हॉगवर्ड्स लेगेसी प्लेलिस्ट में आपको तीनों स्ट्रीम मिल जाएंगी। 3 स्ट्रीम 11 और 55 मिनट्स, 11 और 45 मिनट्स और 11 और 10 मिनट। 3 स्ट्रीम में गेम हमने कंप्लीट किया स्टोरी। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है हॉगवर्ड्स लेगेसी की, अगर आपको देखनी हो तो।
Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. I see. Yes, डार्क भाई. यहाँ पे हम इसको बुरी खबर दे रहे हैं कि इसका भाई मर गया है. He's dead. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. चलो ये भी मिशन completed. Bardolph. Collection updated bond handle. तो अब इतने बाउल बन गए और अब गॉब्लिन को मार रहे हो. गॉब्लिन, इन्फीरियस, ऐशवाइंडर्स, डार्क विज़र्ड्स सबको मारना पड़ेगा साइड मिशंस करने के लिए. तो अभी साइड मिशंस कर रहा हूँ. ये मर्लिन ट्रायल रहते हैं भाई अभी. 1 2 3 4 5 6 7. Collection just 1, field guide pages already 8, Omega statues 7 out of 9. वर्ल्ड मैप पे जाके अगर देखूं कितने मर्लिन टायर बचे हैं अभी भी. 1 2 3 4 5. ऊपर से देखता हुआ आता हूँ. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37. काफ़ी रहते हैं यार. कोई गाचा गेम ट्राई करो. गाचा गेम बोले तो. गुड इवनिंग भैया. गुड इवनिंग जॉर्ज सफेर भाई. हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ब्रदर? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? बहुत सारे मर्लिन ट्रायल बचे हुए हैं यार अभी तो. हम यहाँ पे हैं करेंटली. यहाँ से सबसे पास मर्लिन ट्रायल कहाँ मिलेगा? ये है. दो 3 मर्लिन ट्रायल भी कंप्लीट कर. सांस लेने में भी गाचा गेम मेनली स्टोरी गेम होते हैं बट उनमें कैरेक्टर इन गेम करेंसी से खरीदना पड़ता है. स्टोरी गेम बट कैरेक्टर परचेस करना पड़ेगा यार. कैसे होगा? Lumos. Reparo. Expelliarmus. ये मूनस्टोन वाला कैसे करना होगा यार? समझ नहीं आ रहा. तबीयत सही है. बेटर देन यस्टरडे बट नॉट द बेस्ट यार अभी. ओह ये वॉन्ड हैंडल तो बहुत अच्छा लग रहा है यार. तो मैं लगा के रखूँ बट नॉट द बेस्ट यार अभी. मतलब पूरी सही नहीं हुई है. काइंड ऑफ GTA बट यू हैव टू बाय माइकल. ओह समझा. तो मतलब अलग अलग कैरेक्टर की स्टोरी करने के लिए वो कैरेक्टर खरीद के फिर उसको आगे प्ले करना होगा. तब बढ़िया. अब तो चले आखिरी एग्जाम में साथ को इंग्लिश का तो वो तो हो ही जाएगा. ओ तो ये आपके 12th के थे ना जॉर्ज सफेर भाई? बढ़िया. नाइस रे. ये वाला मर्लिन ट्रायल कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा. यूट्यूब पर ढूंढते हैं. नो नॉट लाइक दैट. बाद में समझाऊंगा. अभी आप बिजी हो क्या? ओके सी यू लेटर.
आओ मूनस्टोन मर्लिन ट्रायल। पहले ये बताओ कि एक गेम के ग्राफिक ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर स्टोरी? मुझे यार मेरे को वैसे जनरली तो बोलूँ तो मुझे दोनों चाहिए। What's up, guys? मुझे दोनों चाहिए, स्टोरी भी अच्छी हो और ग्राफिक्स भी। बट अगर देखा जाए तो एक बारी को अगर स्टोरी बहुत लवली हो तो ग्राफिक्स में मतलब ऑल इन ऑल देखो, अगर ऐसे जनरली पूछा जाए तो मुझे दोनों ही अच्छे चाहिए भाई। अगर मैं कोई गेम ले रहा हूँ आई एक्सपेक्ट बोथ गुड थिंग्स फ्रॉम द गेम एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मैं दोनों अच्छा मिले। बट अगर वैसे आई हैव टू चूज ओनली वन तो आई से स्टोरी। स्टोरी बारी को भाई 11th के, अच्छा 11th के थे, अभी आपकी 12th आगे अब होगी। ओके अभी तो आपका भी 1 साल और बचा है जॉर्ज सफर भाई। टेक केयर भाई, टेक केयर। बहुत ही अच्छा गया तो फिर गेंशिन इम्पैक्ट ट्राई कर सकते हो। गेंशिन इम्पैक्ट मैंने बहुत सुना है यार। रुको, नॉर्टन की तरफ से मेल आई है। ऑफिशियल वॉच पार्टी प्लीज सी गाइडलाइन बिलो टू सेटअप स्ट्रीम वॉच पार्टी गाइडलाइन। PCLSA स्प्लिट 1 के वॉच पार्टी के राइट्स हमको मिल चुके हैं कि वॉच पार्टी करेंगे भाई। एक्सेप्ट द कम्युनिटी है, कम्युनिटी अच्छी नहीं है, गेम अच्छा है, ऐसा क्यों? चलो ये देखते हैं ये वाला मर्लिन ट्रायल कैसे करना है। It's Smith here from GamersHeroes.com, and we've got another quick guide for you in Hogwarts Legacy on one of the Merlin trial puzzles. Now I found this one near the Forbidden Forest, but I'm pretty sure they're going to have similar themes throughout. So if you see one with the 3 pillars that has the moonstone sort of gems inside it, this is how you solve it. You can see it's here. It's near the Forbidden Forest, not far from Hogsmeade. You have to put down the plant on the circular platform that starts the trial. You will then see a group of blue butterflies here. Use the light spell on your wand, and it will gather them up. You can see another set here. बटरफ्लाइज को लाके उस पे छोड़ना है। ठीक ठीक ठीक। लूमोस लगेगा। लूमोस। बटरफ्लाइज ला के इन डब्बों पे छोड़नी है। एक हो गया, वो ऐश वाइंडर है, ये भी कलेक्ट कर लूँ। दूसरा कहाँ है बे? Revelio. Lumos. और बटरफ्लाइज कहाँ है बे? Revelio. नीचे है, नीचे। Lumos. Lumos. बटरफ्लाई कहाँ गई है जी? Revelio. बटरफ्लाइज कहाँ चली गई? Lumos. अयो Revelio. अयो Lumos. बटरफ्लाइज भाग गई। नहीं जी भाई यार, कम्युनिटी की बात ना करूँ तो तभी बेटर रहेगा। कल का तो डेंजर मैच था, देखा लास्ट 2 मैच? अरे सब मैच तो पूरा देखा मैं, बिस्तर में बैठ के रजाई में लौट के, क्योंकि वैसे तो ठंडा लग रहा था, फीवरिश फील हो रहा था। तो क्या बोल रहा था मैं जॉर्ज भाई? हाँ पूरा देखा एंड इट वाज अ क्रेजी मैच एज इट वाज द मैच विच लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिटी के बारे में नॉलेज है नहीं यार, लीग ऑफ लेजेंड्स तो नहीं खेला कभी। Lumos. लीग ऑफ लेजेंड नहीं खेला यार डार्क भाई, तो उसका कम्युनिटी का मुझे नहीं आइडिया। कैसा बताओ ना, आप बता दो, अगर ज़्यादा लंबा बात है और बताने में आलस आ रहा है तो अलग बात है।
Lumos. एक पिलर भर दिया, 2 भर दिया, तीसरा कहाँ है? बोरा। तो गेंजिन वाले गेंजिन के सब कुछ हेट करते हैं। कंप्लीट तो कंप्लीट तो कर क्या रहे थे कल के मैच के लिए? मतलब कंप्लीट तो कर क्या गए थे कल के मैच के लिए? मतलब मैं क्या कह रहा था वो कंप्लीट करूँ? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं जैसा चाहता था वैसा ही मैच हुआ, एंड व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द मैच वाज अ नेक टू नेक कंपटीशन एंड नॉट अ वन साइडेड विनर, जो कि वैसा ही हुआ। जैसे कल 5 मैप्स पे BO5 था, तो पहले तो ऑल 5 मैप्स खेले गए, दोनों टीम 2-2 मैप जीती, डिसाइडर पे जाके डिसाइड हुआ वन थिंग। दूसरा, ऑल 5 में से ऐसा भी नहीं था कि कोई भी मैप एक तरफा गया और ये वो, सो नो, 5 में से 4 मैच ओवर टाइम गए, विच वॉज वेरी वेरी नाइस टू सी, like absolute cinema of a grand final, absolute cinema of Valorant match, and a very great matchup and lovely. सो वजह गेंशिन के सब कुछ हेट करते हैं राइट गेम में, जैसे रिप्ले सिस्टम के बारे में बकते रहते हैं। हाँ, वैसे गेंशिन में एक सोची चीज़ के लिए बकते हैं, सब कुछ हेट करते हैं। अच्छा, सब कुछ हेट करते हैं, फिर खेलते भी हैं पर ओके, मेक सेंस। जैसे मैंने मर्लिन ट्रायल कंप्लीट कर दिया, तो ये मैप से हट क्यों नहीं रहा? अच्छा, हट गया। अब ये वाला मर्लिन ट्रायल करते हैं जाके। फर्स्ट मैप एक तरफा था, 13 जीत। अच्छा, फर्स्ट मैप 13-5 था क्या? मैं भूल गया यार। फर्स्ट मैप के दौरान तबीयत खराब थी ना, उतना याद नहीं रहा। फर्स्ट मैप के दौरान ही मैं स्ट्रीम पे था ना, तो 10 जगह ध्यान था, इसलिए। ये क्या हुआ? कहाँ जाके गिर रहा हूँ मैं? अरे भाई, ये तो ऐसे लग रहा है वाटर पार्क में आ गया। उड़ के जाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि वो नहीं होगा। अरे मैं तो पिचक जाऊंगा बॉल से। अरे बैल हट जा, पत्थर आ रहा ऊपर से। हट जा। हाँ, हट जा हट जा। मेरा मर्लिन ट्रायल पूरा होने दे। वो गेम भी खेले हैं और एड भी करे हैं। वो तो साले राइट वाले, वैलोरेंट वाले भी तो सब ऐसे ही हैं। हम वैलोरेंट को गाली भी बकते हैं, फिर खेलते भी हैं पूरा। बेल लवर, अरे बेल लवर नहीं, पर वो ऊपर से वो आ रहा था ना, उसने वो अटका दिया। मेरा मर्लिन ट्रायल नहीं कंप्लीट होने दिया। अब नेक्स्ट कहाँ पे मर्लिन ट्रायल देखने दो। कहाँ पे है ये वाला? करते हैं, चलो फास्ट ट्रैवल करके जाते हैं, मर्लिन ट्रायल कंप्लीट। भाई ये किसके घर के अंदर हो गया फास्ट ट्रैवल? लॉल। हेलो किटी। मर्लिन ट्रायल कहाँ पे है वो? रोज वन ऑफ द इमेजिन टू डेट बट इज अफ्रेड ऑफ बिग बेल्स। बिग बॉल्स, बॉल्स नहीं बैल भाई। और बिग बॉल से अफ्रेड नहीं हूँ। कैसी है तबीयत अभी? बिलो एवरेज ही है अभी तो मैक्स भाई की तबीयत तो। बिलो एवरेज ही है यार अभी तो। Revelio.
Confringo. Revelio. Confringo. तो ये वाला ट्रायल भी कंप्लीट होने वाला है। हो गया, ये वाला मर्लिन ट्रायल भी कंप्लीट हो गया। तो कोई ना, ठीक हो जाएगी। टेक केयर। और बताओ, बस मैं कुछ नहीं यार, आज तबीयत ख़राब थी तो इसलिए FPS गेम वगैरह ना खेल के, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं है टू थिंक, पुट गेम सेंस एंड एम एंड एवरीथिंग। तो इसलिए स्टोरी मोड गेम में साइड मिशंस करके टाइम पास कर रहा हूँ और थोड़ा जस्ट चैटिंग टाइप स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो मतलब साइड मिशंस, चिलिंग, टाइम पास विद जस्ट चैटिंग एंड चैटिंग द चैट। वेले ने पैच नोट्स कैसे लगे? वेले के पैच नोट मुझे ठीक लगे, बट एजेंट अभी खेल के पता चलेगा बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है या बिल्कुल बैलेंस्ड है, पता नहीं। इन यूजेज पता चलेगा कि लाइक यूज़ करके ना, तभी पता चल पाएगा, जज कर पाएंगे कि कैसा है। लेट्स सी। हाँ, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। हाँ, वो जुकाम भी हो गया ना, तो नाक, आवाज़ एंड एवरीथिंग फक्ड अप हो गया। कल अचानक से नहीं, परसों से था तबीयत तो। ओ इन्फेरीज। Potato. Stupid. Confringo. Bombada. Incendio. Crucible. Defendo. Potato. खत्म इन्फेरीज। अब मुझे ट्रायल करने दो भाई। शरीर दुखा हुआ है ना आपको? फीवरिश में फील हो रहा था थोड़ा। हाँ, अब ये हो गया, ये वाला तो, ये वाला पिलर तो हो गया। ये वाले को कैसे करना होगा? को ऐसे करना होगा। ये भी हो गया। ट्रायल कंप्लीट। ये वाला नहीं, अभी एक आधा और रहता है पिलर कोई। ये वाला रहता है। नए पैच नोट देखकर क्लोव को कितना नर्फ कर दिया और आइसो भी रिवर्क किया है। नहीं यार, क्लोव को नर्फ मत बोलो यार, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं तो लोब में आदमी हूँ। रुको, मुझे देखना पड़ेगा। पैच नोट्स पढ़ता हूँ जॉर्ज सफेर भाई में। आई विल रीड पैच। वो तो तबीयत खराब थी, वरना कल ही पढ़ लेता मैं, पर अभी पढ़ता हूँ कुछ दिन कह रहा हूँ, कुछ देर में। हाँ, 2 दिन पहले मुझे भी हुआ बहुत सर्दी, बट पता नहीं कैसे नेक्स्ट डे ठीक हो गया। मेरा तो अभी 2 दिन हो गया यार, अभी ठीक तो नहीं हुआ। मतलब देखो, फीवर नहीं है अब, नाक भी नहीं बह रही है अब, तो वो जुकाम भी नहीं है अब, बट बॉडी बहुत वीक और टूट सी रही है। ज़ोर से पढ़ना मुझे भी सुनना है। हाँ, स्क्रीन पे खोल के पढ़ूंगा अभी। बस थोड़े से मर्लिन ट्रायल्स और कर लूँ 2-4। कहाँ पे नेक्स्ट? इस एरिया के मर्लिन ट्रायल तो सारे कंप्लीट। इस एरिया के भी सारे कंप्लीट। इस एरिया का ये वाला रहता है और ये वाला रहता है। चलो ये 2 कंप्लीट करते हैं। 2 मर्लिन ट्रायल और कंप्लीट करते हैं। पूरे मैप के मर्लिन ट्रायल्स कंप्लीट कर देंगे। एक अचीवमेंट अनलॉक हो जाएगी। प्लैटिनम रन के लिए इजी हो जाएगा अपने लिए गेम। ये रहा। Confringo. Flipendo. Glacius. Defendo. ट्रायल चालू हुआ है। करना क्या है इस ट्रायल में? अच्छा, Confringo.
कहाँ पे हैं भाई? एक ये है, एक वो है, 2 पूरा, एक और होना चाहिए। Revelio. Confringo. तीसरा कहाँ है? Revelio. तीसरा कहाँ है बे? अबे यार। Confringo. Crucial. Confringo. क्लोव के स्मोक जनरेट करने के लिए 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड कर दिया, और जो डीके है वो पहले लेट फटता था, अब थोड़ा जल्दी फटेगा। तो मतलब एक नर्फ और एक बफ दिया है। Revelio. अरे एक वो रहा, एक वो रहा, तीसरा यहाँ कहीं होना चाहिए। 1 2, ओ वो रहा तीसरा। इतना दूर नीचे, what the hell? Confringo. Revelio. Confringo. Oh shit. Confringo. Confringo. And one more Confringo. हो गया ट्रायल कंप्लीट। क्या हो रहा है ये? जला तो रहा हूँ तीनों साथ में। Revelio. Confringo. हो गया फाइनली। आईएसओ के डीके को 2 की जगह 1 कर दिया है, और ऑल टाइम शील्ड ऑटोमेटिक आ जाएगी चाहे हो या ना हो। तो मतलब एक नर्फ और एक चीज़ बफ कर दी। चाहे शील्ड पहले एक्टिवेट करके यूज़ करके टूट भी गई है, पर अल्ट करने से पहले शील्ड यूज़ करके टूट भी गई है, फिर भी अल्ट करने पे वो हो जाएगा। तगड़ा बफ है यार। TDLC के का बैरियर मैश और ग्रेवनेट इंटरचेंज कर दिया, उसका ग्रेवनेट रिचार्जेबल हो गया है। ग्रेवनेट रिचार्जेबल कर दिया, और बैरियर मैश तो नहीं था पहले भी, आई थिंक रिचार्जेबल। उसकी वॉल पहले रिचार्जेबल थी, टाइम के साथ वापस आ जाती थी। Oh, here's a pleasant surprise. Flipendo. ये वाला पिलर भी हो गया। Revelio. और बाकी 2 पिलर वो रहे, पहले वो वाला कर देता हूँ। Flipendo. ये वाला भी हो गया। Dinner I'm hearing. Somebody out there? Who goes there? Protego. Stupefy. Defender. You'll come.
Incendio. Barely fell back. फोन स्टोन भी कलेक्ट कर लूं as much as I can. Revelio. को पलटना था तो इसको फ्लिपेंडो कर देंगे, इसको फ्लिपेंडो कर देंगे, इसको फ्लिपेंडो कर देंगे और ये भी हो गया मर्लिन ट्रायल कंप्लीट। ये सब मैंने रीशु भाई का स्ट्रीम देखा तो पता चला उनको नया मंडल भी पसंद आया और यूनिक लगा। नाइस है। उन पे वो होंगे क्या बोलते थे अर्ली एक्सेस, बट आर दीज नॉइजेस। और कैसा हो रहा ना वो जो डार्क विज़र्ड्स को मैंने मारा उनको, इसलिए ऐसे नॉइजेस निकालने साले। इधर के तो सारे मर्लिन ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं इस एरिया के। तो इधर नॉर्दर्न हॉक्सफील्ड के तो हो चुके हैं। एक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब गिनते हैं कितने बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट के गिन लेते हैं क्या। 9 10 11 12 13 14। फिर इधर आते हैं 15 16। फिर राइट आते हैं 16 के बाद एक 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 रहते हैं। क्रेजी भाई पहले पैच नोट देखो ना, फिर नकलता हूँ मैं। ओके ना अर्ली एक्सेस नहीं था, वो कुछ स्ट्रीम पे वाइटी वीडियो देख रहे थे। ये सब पैच नोट्स और नए बंडल का। अच्छा क्या गिन रहा है? मैं साइड मिशन स्लैश मर्लिन ट्रायल्स वगैरह जो करने रहते हैं इसमें वो गिन रहा हूँ। .4 आ रहा है ना। 10.4 ऑफिशियल पेज पे तो अभी रिलीज का वो कुछ वो नहीं हुआ है, आया हुआ है। मैप रोटेशन आइसबॉक्स जैसा बैक इन कॉम्पिटिटिव एंड डेथ मैच क्यूज। एबिस एंड बाइंड आर आउट। तो आइसबॉक्स एंड एसेंट वापस आएगा, एबिस और बाइंड बाहर जाएगा। ठीक। व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स इन द पैच नोट्स? मैप रोटेशन बताई हुई इन्होंने तो। एसेंट से वॉल बैंक भी हटा दिया है और आईएसओ की वॉल को अब राइट क्लिक से स्लो भी सेंड कर सकते हो। वो अच्छा किया वॉल को स्लो भेजने वाला। रिलीज डेट ऑन ट्यूसडे March 4, वेडनेसडे March 5 डिपेंडिंग ऑन द रीजन यू प्ले। तो हमारे लिए 5 तारीख को आएगा। आज क्या है 3 ना, हमारे लिए परसों आएगा। ठीक है। आइसबॉक्स इन है और एनीथिंग एल्स? N28 वेले बैटल पास। ओ आउटलॉक इसकी नई बैटल पास में और वैंडल की सही लग रही दिखने में दूर से तो। The new Cyrus bundle will be added to the store 2 days after the patch drop. The new agent introduces a new type of debuff called Hinder, which allows the okay. यार ढंग से दिख नहीं रहा है यहाँ पे। पैसा भेजूँ? किस चीज़ का पैसा राहुल भाई? यार यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा है। तो वैल खोल के देखते क्या पता उसमें हो। Let me travel back to Hogwarts and save the game. उस चीज़ का संडे तो आन दो। पहला सेशन ले क्या टाइम आन दो। पहला सेशन जिस दिन लूँगा उसी दिन मांग लूँगा। अभी एकदम ऐसे वो मत करो। तबड़ चिल मारो।
भूख सी लग रही है यार अब। चलो दवाई वैसे भी खानी है तो खाना खा के दवाई खाएंगे। पहले में देखते हैं यार पैच नोट्स के बारे में कुछ आया होगा तो। अभी तो डॉक्टर चेक करवाया नहीं यार, करवाया जा गेम। थोड़ा सर भी घूमने लगा है। 2 घंटे की स्ट्रीम कंप्लीट करके बंद करता हूँ, बहुत है इतना ज़्यादा ज़्यादा ज़बरदस्ती एक्सटेंड भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। दवाई दवाई घर पे पड़ी थी मेरी पहले की। पैशनोट 10.3 आ रखे हैं यहाँ पे भी, के बारे में देख लेते हैं। ये तो पढ़ रखे हैं यार, इसमें मिनी मैप ठीक किया था और वो सब किया था। कोई कह रहा है ओह ओनी छोटी आई हुई है मेरे में। और ये ओवर ड्राइव वैंडल। कोई कह रहा था कि ई स्पोर्ट सेक्शन से 3 तारीख को सारी कैप्सूल हट जाएंगी, ये तो यहाँ अभी भी हैं। तो जो भी कह रहा था भाई, तुम्हारे मुंह पे थू है भाई। बैटल पास कब तक दिखा रहे हैं यहाँ? कल है मेरे लिए तो ये विश लक है क्या कल? पहले ये बताओ, उसके हिसाब से लक विश करेंगे ना भाई। अब तुम कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो क्योंकि तुम कुछ बैंक रॉबरी करने जा रहे हो और उसके लिए किस्मत चाहिए। और अब विश मी लक बोल दो, मैं कर दूँ यहाँ से विश लक, तब तुम्हारी बैंक रॉबरी सक्सेसफुल हो जाए तब। पहले रीज़न बताओ तब बोलेंगे भाई, जो भी बोलेंगे। इलेक्शन नियरली कंप्लीट हो चुकी है मेरी, बस जज और ओडिन रहती है लेनी बाकी। और सॉरी जज और आउटलॉ, ओडिन भी मैं चलाता नहीं, पर जज और आउटलॉ चलो देखते हैं। अभी तो फंड्स नहीं है सबके। कांगा देखो यूट्यूब पे, चलो डीएम के बाद देख लूँ, चलेगा। Death match. Warm up. नहीं मेरी एजुकेशन रिलेटेड है, डिटेल में कल ही बताऊंगा। चलो ऑल द बेस्ट भाई। कितने दिन बाद खेल रहा हूँ मैं, ना कल खेला ना परसों खेला ना आज पूरे दिन खेला। इतना वियर्ड फील हो रहा है गेम, इतना वियर्ड फील हो रहा है यार गेम। और वही बैंक में मैसिव का पैसा रहा तब। नहीं वो तो मुंबई से हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उस बैंक में तो पर्टिकुलर मेरे उसी बैंक में तो मेरा पैसा नहीं रहेगा भाई। इतना क्रिस्पी एम हाँ अभी तो एम किया ही नहीं यार, अभी तो गोली भी नहीं चलाई डार्क भाई। हग रहा हूँ मैं तो, उल्टा बोल रहा हूँ कि 2 दिन बाद खेल रहा हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है स्क्रीन पे। अभी थोड़ा हाथ तो वार्म अप होने दो। ये आवाज़ इतनी स्मूथिंग क्यों लग रही है सिंगुलैरिटी कैरेक्टर? ये देखो इसे आरएनजी के हो देखो। विच सर्वर? एज यू नो आई प्ले एसजी सर्वर ओनली ब्रो। 81 पिंग एसजी सर्वर। जो मैं से भाई कैसे हो? आई एम बिलो एवरेज प्रोफेसर। भाई आप बताओ क्या हाल है आपके? आप पहले भी तो आए थे स्ट्रीम पे अभी आज, या कल की थी वो? शायद कल की थी वो शायद। वॉच टाइम पूरा नहीं लिखना, सिर्फ WH लिख दो आ जाएगा। मैंने पूरा वॉच टाइम का डाला हुआ नहीं कमांड, क्योंकि जनरली कोई पूरा टाइप करता नहीं है। You're all more important than words on a brief. Look out for each other. Fight. 2 घंटे की स्ट्रीम करके बंद करता हूँ, बस कांगा देख लेता हूँ यूट्यूब पे। भाई एवन पे शिफ्ट वॉक कर रहा है। ओह फ्री फायर पे ले उधर से रैना ने। दिल रहना के सौदा भाई। मैं बढ़िया हूँ, W पेपर गया मेरा, नाइस रे। अब नेक्स्ट कब है आपका? ऑल द बेस्ट उसके लिए। लार के टट्टी एम है, अभी तक मैसिव का एम देखा ही नहीं। अरे दिखा देंगे। यू डोंट मिस शॉट्स मैन, लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई डू मिस शॉट्स यार। ये कब हुआ डार्क भाई आई डोंट मिस शॉट्स? हाँ ये बोलो यू मिस शॉट्स वेरी लेस, बट बिल्कुल ऐसे मत बोल दो आई डोंट मिस शॉट्स भाई। इतनी पिंग आ रही, इतनी स्मूथ कैसे शॉट्स कनेक्ट हो रही है? लो बोलते ही हक दिया। लगता है खुद की नज़र लगा ली भाई, की नज़र लगा दी।
अभी तो मेरे कंधे लटके हुए हैं। अभी तो मैं जब स्ट्रेट अप बैठता हूँ ये वो तब। अरे आज बॉर्डर नहीं लगाया वेबकैम का। अरे आज टाइम पास स्ट्रीम थी ना तो स्टोरी मोड गेम खोला हुआ था। ये तो मैंने अभी खोला मैक्स भाई वेल वो पैच नोट ढूंढने के लिए। पर वो वैलोरेंट वालों ने पैच नोट अभी ऑफिशियली अनाउंस करे नहीं है, तो कांगा देखूंगा अभी, जैसा कि डॉट्स ऑफ फेयर भाई बोल रहे थे। अभी खोलता हूँ। अरे उस दिन वेजी भाई की गेम देखते भाई जब आपकी तारीफ हो रही थी। मुझे आप वो बता दो टाइम स्टैम्प और किस दिन की स्ट्रीम है, मैं जाके ढूंढ के देख लूँगा यार, अगर अभी भी है वो स्ट्रीम तो। अच्छा अच्छा समझा। हाँ जी, तो वो मैं हॉगवर्ड लेगेसी के साइड मिशन कर रहा था, जैसा आपने टाइटल में देखा होगा ना कि चिलिंग एंड डूइंग साइड मिशंस, तो मैं वो कर रहा था। वैल तो अभी जॉर्ज सफर भाई ने बोला तो मैं सॉरी सब नहीं बोला कि भाई पैच नोट्स पढ़ो, तो क्रिकेट रीशेड्यूल भाई करना पड़ा यार। अनमोल भाई कोई नया गेम सीखना और खेलना मस्ती का काम तो नहीं है, वो भी FPS कॉम्पिटिटिव गेम। तो इस हालत में तो मैं नहीं सीख पाता, खेल पाता। यहाँ डोमिनेट कर रहे हो, कुछ दिन बाद आप भी डोमिनेट हो जाओगे इन माई प्रेयर्स। मतलब मैं डोमिनेट हो जाऊंगा इन योर प्रेयर्स मतलब? सेवेंथ को है। मुझे क्लॉस ने उसके चैनल का मॉड दे दिया। ओके दैट्स रियली नाइस। यार समझ नहीं पाया मैं क्या मतलब उसका डार्क भाई। यार कान सी हो रही यार, अब तो गला भी सूख रहा है और खाना भी खाना है, दवाई भी लेनी है। चलो भाई इसके बाद मैं पैच नोट पढ़ता हूँ तमीज़ से। भाई साइफर भाई मर जा यार, बीमार आदमी से क्यों स्ट्रगल करवा रहा है एम करने के लिए। भाई प्रिलिटू के पास कितने दिन बाद चला रहा हूँ मैं वो अपनी सेकंड आईडी। वैसे वो भी मॉर्टल 2 हो गई अपनी सेकंड ऑल्ट इलबॉट वाली, तो वो भी मॉर्टल 2 कर दी। एंड भाई उस पर खेला ना 4 दिन, तो उस पर मैंने प्राइमोडियम चलाया। बहुत दिन प्रेल्यूड चलाया ही नहीं, आज इतने दिन में प्रेल्यूड चला रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है भाई। वन किल रिमेनिंग तो बॉडी शॉट मार गया। भाग गया यार वो। चलो फाइनली आकर किल शॉटी से किया। जी भाई भाई मेरे को नहीं याद स्ट्रीम और टाइम स्पैम, तो टाइम स्टैम्प यार। चलो कोई नहीं, अभी वो करता हूँ। डोमिनेट हो गए मतलब कहीं और। अबे कहाँ डोमिनेट करवा रहे हो भाई मुझे, मेरी डोमिनेशन वाली किंक नहीं है मेरे भाई। चलो पैच नोट कहाँ पे बोला आपने? कांगा। अरे ट्विटर पे देख लेते हैं ना, ट्विटर प्रोमो नहीं डाला। मैं बोला तो मैं स्टोरी मोड गेम खेल रहा था अभी तक, वो तो मैंने ओ मीटियोर भाई रिस्पेक्ट्स रिपोस्ट सेव भाई। फर्स्ट एवर प्लेयर इन वैलोरेंट हिस्ट्री टू होल्ड 2 back to back masters trophies. So only player in whole of Valorant history till now, and अभी future में तो कुछ कह ही नहीं सकते, to have 2 masters trophy. If Turkey would have won, he would have been the first player to two back to back masters trophy. Yeah, not first ever। रुको मुझे याद करने दो। हाँ याद आया। The first ever player to hold 2 back-to-back Masters trophies, Meteor, cause इससे पहले जो मास्टर्स का जो चैम्पियनशिप हुआ था वो था शंघाई, पिछले साल वाला मास्टर शंघाई। वो भी चिंजी के साथ मीटियोर जीते थे, ट्रॉफी उठाई थी। और अब उसके बाद फिर बीच में चैम्पियंस हुआ और सीधे अब ये तो एक मास्टर्स के बाद अगला मास्टर सीधे ये वाला हुआ है मास्टर्स बैंकॉक, और वो भी मीटियोर जीते। तो इट्स द फर्स्ट प्लेयर टू एवर लिफ्ट 2 मास्टर्स ट्रॉफी इन अ कंटिन्यूएशन। एक मास्टर्स में ग्रैंड फाइनलिस्ट थे, हारे। यो आई जस्ट वॉच द न्यू एजेंट एंड डैम व्हाट डुअलिस्ट। यस डेस्पराडो भाई, इट इज़ वेरी नाइस। उसी के पैच नोट्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए ट्विटर पे आया हूँ चैट को लेके। बाकी बस अभी पहले मीटर भाई के बारे में बात कर रहा था। तो फर्स्ट प्लेयर टू लिफ्ट बैक टू बैक मास्टर्स ट्रॉफी। पहले मास्टर्स मैड्रिड में फाइनलिस्ट रहे, पर सेंटिनल से हार गए, फिर शंघाई में विनर बने, और फिर उसका सीधे उसका ही अगला मास्टर्स इवेंट यानी बैंकॉक में फिर जीत गए। तो शंघाई जीते, फिर उसका सीधा अगला वाला मास्टर्स टूर्नामेंट बैंकॉक जीते। तो फर्स्ट एवर प्लेयर टू लिफ्ट बैक टू बैक मास्टर्स ट्रॉफी and second ever player in Valorant's history to lift 2 Masters trophy. One is Chronicle
एंड नाउ वन इज़ मीटियोर। इन दो के अलावा अभी तक कोई भी बंदा नहीं है जिसपे 2 मास्टर्स की ट्रॉफी हो। एंड क्रॉनिकल अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ अकेले बंदे हैं, फनेटिक क्रॉनिकल, जिन पे 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज है। दे वॉन्ट 2021 मास्टर्स बर्लिन, then he won 2023 VCT lock-in, and then he won 2023 VCT Masters Tokyo with Fnatic. So he won 2 trophies with Fnatic, one with Gambit, and he is the only player in the history of Valorant till now to have 3 international trophies. And then Sasi is the only player in Valorant history to hold 1 Masters and 1 Champions trophy. So these people, Meteor, Sasi, Chronicle, Durke, Boaster, these people holding two international trophies, and then Chronicle being the only one holding 3 international trophies. These people come in the elite group of players. These are untouchable players, dude. And if Les has won today, he would have joined. I mean, not today, but like the tournament, the playoffs, and won the trophy with Vitality. Then Durke would have joined Chronicle in being the only person with 3 international trophies, and then Durke and Chronicle would have been only 2 people with 3 international trophies, and Les would have joined Sasi with the only person to have lifted a Champions and a Masters trophy. So if Vitality would have won, 2 people have reached 2 new milestones / records, Durke and Les, and if T1 won, which they did, Meteor reached another milestone with Chronicle to have 2 Masters trophy ever. Only 2 people are there. If someone asks for help after taking this agent, I will. What do you mean? Now let's check for patch notes. New patch notes leak. That night in Madrid, that night in Bangkok, that night in Los Angeles. Good night. Lamau. Lamau. Narrate, Buzz, Mind Freak, Squeeze. इतनी बड़ी जीभ निकाल लगे भाई, छिपकली है क्या? What the fuck? I always knew my idol would win. My idol stacks Valorant. Buzz and T1 Chogomo. Felt like a rock star for a day. Thank you, Thailand, for everything. You did great, Buzz. Master Shanghai, Masters Bangkok. Master how ready to handle their defeat? लियो फारिया, कितने फॉलोअर्स है लियो फारिया के? 3000. सैमसंग का नया बजट सेगमेंट का फ़ोन लॉन्च हुआ, A56 बजट सेगमेंट का फ़ोन. ओह रुको. Silver lining for me, I think that was some of the best resilience I've ever seen out of my team, honestly. And we played really well, but it wasn't enough. And I told them earlier, like, life of a competitor is the hardest thing ever, man. Like, you go through the lowest lows, and you also reach the highest highs with the team you have. And you know, there's no life without losses in everything you do. So, I told them, like, what's a life of only winning? We never wanted that. And so silver lining, I think, there's still more tournaments. We got experience here, and this will only motivate us Wait, to let me get call better. him right now. But कॉलू, इनकी जीभ बहुत खुश रहती I होगी, wish I could, इतनी like, जीभ बाहर निकाल रहे. Maybe. show them how much they mean to me, my team, because I wouldn't want it any other way. Like, all the hard shit we've been through, man. Like, you guys are so good at this game. You guys, like, make life every day so fun. It's all right we lost. Like, I'm already coming to terms with it, because fuck it, bro. We're gonna win the next one 100%. And yeah, sorry I'm rambling a lot, but it's tough, but it happens, We'll win the next one. Say less cyber jeeping, bro. Welcome to the Thank you. stream, man. We'll take the next question from Miguel. Been here day 1. Congrats, even deserved. Buzz Meteor. We are coming back stronger in Toronto. MIBR. Live G2 crew and everything. क्या लगता है सोल किसी टीम को हरा पाएगी?
Depends on the roster. I haven't checked out the rosters yet. Wasn't stacks are the crazy duo, bro. Izu by patch notes. The comeback of the last map from point line was crazy with this. They destroyed. Is this guy bothering you? Me bothering who? Desperado. How am I gonna bother him, man? 2021, 2025. No, both are great. Did great. Happy birthday to Kang Kang. GWB 31. Okay. Carpe won. Will not breathe until we get a win. Lol. Patch notes. Yeah, wait. Let me search. Valorant 10.04. Let me search. रुको जॉर्ज साहब भाई कुछ मिला कांगा देख लो कांगा यूट्यूब और ट्विटर वेट तो medal decay ability will now only explode when touching the ground. Medal now detonates faster. Overheal now only grants a decaying movement speed buff for part of the duration. मतलब overheal now only grants a decaying movement speed buff for the part of the duration. Isn't that how it worked before? This is Medal. If you do anything to my friend, I'm gonna play Clash of Clans with. Okay, the overheal stays a little longer. Kanga O2 better. Kanga O2 better. Okay. Wait. YouTube. They're coming straight in. Trust me, I've got... Valorant's patch 10.4 is out in 2 days. Here's an early look at the changes. First of all, for Clove, metal no longer explodes after a set time in the air, and instead it now explodes 0.75 seconds after making contact with the ground. Essentially, this is a small buff to using it really close to you, but in any other case the enemy has more time to react. The cooldown on Clove's smoke was also increased from 30 seconds up to 40 seconds. Shit. And a big change to Clove's pick-me-up, the speed duration was massively decreased from 8 seconds down to 3, however the health buff was increased from 8 seconds back up to 10 seconds. Next is an interesting change to Deadlock. Her wall and GravNet are swapping abilities. This means her wall is now on C and costs 400 credits, meanwhile her GravNet is on E and has a 40-second cooldown. To account for this, the GravNet duration was slightly decreased from 16 meters to 13 meters, and there were some slight audio changes too. Next up we have some changes to ISO. They increased the bullet tag when your shield is broken, so now you'll move a little bit slower. His undercut got a few changes. The charges decreased from 2 down to 1, the cost increased from 200 up to 300, however undercut will now also suppress as well as vulnerable enemies for a total of 4 seconds. What? For contingency and also suppress, the cost increased from 200 up to 300. Is that crazy? They give a suppress to ISO's vulnerable. For contingency, an alternate fire option was added so you can Euro what 6391863 is no cyber jeeping, bro. choose to send out the wall I don't at know. half the speed without affecting the overall duration. Finally, for ISO, they fixed a bug with its ultimate, so you will now always start it with a double tap buff to ensure an orb spawns upon winning. Lastly, for agents, Teo is receiving a small nerf. The damage for guided salvo was decreased from 70 down to 65, and it now also deals 50% damage to non-player objects,
meaning it no longer breaks the killjoy lockdown. Okay, As that's Sand returns good. to the map pool and there is an update to B main, the wall here was reinforced so that it is no longer penetrable. Otherwise, that's everything in patch 10.4. Again, it's releasing on either Wednesday or Thursday depending on your time zone. Let me know what you think of these changes. Okay, good, good. Some good buffs and some good nerfs, and the S&P wall is a good job, because bro, who wants to be shot in the head even before the round starts? Well, I'll do one more deathmatch because I haven't played since the past 2 days. I'll do one DM and then I'll leave. Well, that's my suitcase number, and you know what is my suitcase? Nope. कैसा लगा Clove? A little Match sad found. that the smoke's duration is nerfed, because I used to play her a lot and her smoke's regeneration was one thing which countered her smokes being very like her smoke regeneration duration being nerfed is bad, because when her smokes like used to fade away quickly, it used to come back quickly, so it kind of balanced it out. But now her smoke duration is less, Deathmatch. they fade away Warm up. at the same in the same amount of time, but now they will regenerate even more late. So that's bad and sad. यार पैर वैर ठंडे होने लग गए. I need to leave and take Dominating. rest now. Don't die. If you need help figuring out how, just ask. Fight. Keep it cool. That's how you survive. चलो यार निकलता हूँ मैं. ध्यान रखो. Bye 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 bro. Take care. All the best for your last exam. See you hopefully tomorrow stream. I hope I get better and I'll be able to stream tomorrow. Dominating. Goodbye. से पहले ठंडा लगे I will Reyna leave. killed. Got three. Oh wow. Shift walking. Headshot. Sage killed. I entered GDP that says I must ensure I do not violate the treaty of 14 countries. Damn bro. You are at very high risk. Wish you all the luck and all the very best for your endeavor of not letting the secret of 14 countries or well, treaty, for not all the very best for keeping the treaty safe.
Just a single button is over. So like, are you under threat for it or what? Reyna killed. Ten kills remaining. Finished. That's done. Got 3. Now 4. Oh, the teleporter. Would be nice with my friend. Huh? Who's your friend? And I'm nice with everyone though. I'm not unnice or bad towards anyone though. Five kills remaining. Good. Auf Wiedersehen. मेरा न्यू फ्रेंड है ये, हमारी बात पाकिस्तान में हुई थी. यू बीन टू पाकिस्तान? ये मुझे पहली बार पता चल रहा है डेस्पराडो भाई. One down. क्रॉसर हेड पे तो नहीं था. आई डोंट नो हाउ वाज दैट अ हेडशॉट. Got one. One kill remaining. वो क्या क्राउच अप मूवमेंट था. लिटरली अनट्रेसेबल. Auf Wiedersehen. वाओ. Dominating. Strong results. Let's run it again. चलो बाय बाय भाई. I'll leave the stream here. See you all hopefully tomorrow if I get better by tomorrow. If my health improves, see you all tomorrow. Yeah, that's all. Mortal 2, ये भी Mortal 2 तीसरे to go. Bye bye Desperado bro. See you later, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. See you someday. Bye bye.